हेलो एवरीवन, केसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम सीखेंगे Kyocera M2040 प्रिंटर की रिप्लेस MK एरर मैसेज कैसे क्लियर किया जाता है। Press 1087 1087. Next, press 251 OK. Next, select clear and press OK. Next, press 2 times reset. Next, press 1 and OK. Replace MK error message clear done.